Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is Captain Retired Dhaka Apni Palestine Wala. I am again with the judge, the Justice Katju from Indian Supreme Court, which we had the interview yesterday also. Today is the second episode of that interview, the continuation, and we are going to talk about Pakistan politics and the international politics. What is the international politics? What is happening on the international front, both from the Indian point of view and from the Pakistani point of view? And is it a bipolar world or is it a tripolar world? What kind of a power polarization is there in this world these days? So I welcome again Mr. Justice Kaju to come in my show and welcome you, sir. How are you? Fine, thank you. Sir, first of all, let us know, uh, is this world a tripolar world or a bipolar world or a unipolar world? You see, presently the situation is that there are two super alliances in the world which are conflicting with each other. One is USA and Europe on the one hand. The other is China and Russia on the other hand. The present situation which has developed is that there are two super alliances which are in direct conflict with each other. They are not in conflict militarily because of nuclear weapons, they will destroy each other, but they are operating through their sort of agents or subordinates. So this is the situation in the world. Now, uh, would you like me to talk about Pakistan? Yes, sir. I want that in that perspective of the bipolar world and the Chinese and Russian bloc and the European and American bloc, what Pakistan has, what are the implications of these two blocs on Pakistan? See, you must understand that after after partition and Pakistan became an independent state, it very quickly became a subordinate of USA. What had happened was that a Cold War had started between America and the Soviet Union, and America needed allies, and one of the big allies was Pakistan, and therefore Americans uh, pumped in a lot of money into Pakistan. They delivered weapons to the Pakistani army. They, uh, you know, brought in a huge amount of aid, so-called aid, although all that aid was with strings attached. So huge amount of money was pumped in by Americans into Pakistan, and Pakistan became almost a semi-colony or neo-colony of the United States. Now, uh, Pakistan was totally allied at that time with America, and whatever Americans ordered, the army, which is the real power in Pakistan, would carry out the order of the Americans. For example, uh, the Americans wanted to remove Zulfikar Ali Bhutto because what Bhutto was doing, he was sort of shifting a bit away from America towards Russia and China, and also he wanted nuclear weapons, so he uh, was getting nuclear technology from France, which greatly offended the Americans, and they told General Ziaul Haq that
we don't want this man in power anymore. So Ziaul Haq just saluted and he said, Sir, I will carry out your order. And Ziaul Haq got Bhutto hanged by a fake trial. So now the generals in Pakistan, even today, they are all um, beholden to USA because, in various ways they have been won over by the USA. For example, uh, many of the children of the senior army generals of Pakistan, they have been given jobs in the World Bank or IMF or in some big multinational corporation and getting huge salaries, or the children of these generals have been given admission in Harvard or Yale or some Ivy League university with full scholarship. So this is the way all these generals have been won over by America. Many of these generals, they have huge bank accounts in foreign countries, millions of God knows how much money. You know about General Bajwa, he has huge amount of money. So all these army generals, even today in Pakistan, will carry out the orders of the United States. And earlier, Pakistan had only one master, that was the United States. Now, what the situation which has developed is China has come up as a big superpower. It has displaced USSR, which collapsed. And the Chinese have made huge economic investments in Pakistan. You know the China-Pakistan economic corridor, and the Chinese have penetrated into the Pakistani economy. They have captured many of the markets in Pakistan. They built this Gwadar port. I mean, now Pakistan has not one, but it has two masters. The United States, which was earlier the sole master, but now a second master, that is China, has also come into Pakistan. The army and bureaucrats are all with America, of course, because all their children are, as I told you, have been won over by giving them jobs with huge salaries in big corporations, World Bank, etc. in America. So army and bureaucracy is all pro-American. But Chinese have come in a big way into, and China is on the border of Pakistan, whereas America is far away. So it is easier for Chinese to penetrate into Pakistan, which they have done in a big way. Now the situation is that these elections which were held recently in Pakistan were all rigged because 85 to 90% people in Pakistan solidly support Imran Khan, as all opinion polls show. But Imran Khan had antagonized the USA. He had, for example, criticized the uh, sending of troops from Pakistan into Afghanistan at the orders of America. Then he had said that the relationship between America and uh, Pakistan is of master and slave. And then, as you remember, when the Russians invaded Ukraine, then Imran Khan went to Russia and made some secret deal with them. All this has very much antagonized the Americans. You remember uh, the president of USA would not even speak to Imran Khan when he was prime minister. So the Americans are totally determined that Imran Khan must not be allowed to come to power in Pakistan again. And they have told the army that, and your army will just carry out the orders of the Americans. So, if free and fair elections had been held, then out of 266 seats for which elections were held for your National Assembly, my guess is
at least 200, if not 220 seats in your parliament would have been won by the PTI candidates. But as everyone knows, the election was stolen. There was massive rigging. In fact, I was watching on YouTube. At one stage, it was announced that the leads are uh, 148 PTI candidates were leading, and only about 30 or 35 PMLN or PPP candidates were leading. There was a massive lead of PTI. But suddenly the announcement of the leads was stopped. And for several hours, there was no announcement. And after that, the announcement started coming very different. And ultimately, it was announced that PTI got about 93 seats or something like that, when they should have got at least 200, if not 220. So massive rigging was done. And in fact, even before the elections, in that judgment of Pakistan Supreme Court headed by Justice Qadi Faiz Isa, who deprived the PTI of the symbol so as to make it very difficult for PTI to win. All that was done on the order of the Pakistan Army, because the Army has begun, and all your institutions, whether your judiciary, policemen, all carry out the orders of the Pakistan Army. Because as you know, power grows to the rate of a gun, and with the army. So whatever the judges are told to do, they will do. Whatever the election commission is told to do, it will do. So there was massive rigging, and thereby reduced to the staff. Now, on the one hand, the Pakistan Army So can you hear me? So it was a lot of disruption for about a minute and a half. So now can you hear me?
So now can you hear me? So can you hear me now? Due to this disruption, we are, as yesterday also, we lost him several times, and the interview, you know, lacked flavor. It was a call from Justice Katju, who said that there is some problem with the internet, and inshallah, he's trying to come back. And it is occurring again and again, and we'll try to find out a solution. I hope this time it does not fail. Okay, I can hear you. The question is that you told us everything about, we could hear this, that what has been happening with the army taking side of America, and they've been subdued to their demands. But what I want to say is, when Bhutto was hanged, Henry Kissinger came to Pakistan, and he also warned General Zia that he will proceed with the nuclear, technology. But Zia refused it and took an assertive action against this, and we were able to make a nuclear arsenal. The army made it through. So it is not always that army is listening to Americans. See, the Bhutto did not listen to Kissinger, and that is why he was hanged. See, let me again explain to you the situation in Pakistan. That whereas the Americans have hold over your army and bureaucracy and all, they will obey the orders of the Americans. And the Americans are very hostile to Imran Khan for the reason I told you just now, that Imran Khan has tilted somewhat towards Russia and China, and he has criticized America strongly, saying that they are masters and we are their slaves. And we were forced to send our troops into Afghanistan on the order of the Americans. So Imran Khan has been criticizing America a lot, and therefore America is very hostile to Imran Khan. But the people, 85, 90% people are with Imran Khan. Now the situation which has developed is that there is direct confrontation between Pakistan army and Pakistan people.
The people are with Imran Khan. The army is against Imran Khan. So presently, the people don't have any weapons. And as you know, power grows out of the barrel of a gun. And it is the army which has the gun. So presently, the people are scared that they will be arrested and killed, whatever. But this situation will not last long because people today may be unarmed, but China is just across the border, and Chinese will not take this lying low, this rigging of the elections, and they will start sending weapons into Pakistan the way Russians and Chinese send weapons into Vietnam. So people will get armed in that way. They will get arms from China. So the only way to have peace and stability in Pakistan is to cancel this fraudulent election of 8th February and have fresh elections under supervision of the United Nations or some reputed international agency. And during that election period, the army must be kept in the barracks. And the Imran Khan party is bound to win. The party symbol should also be restored. Free and fair elections are held. And whoever wins should be allowed to form the government. This is the only way. You have to cancel this election completely. Saying that Form 45 and Form 47 should be checked on will not do because the whole exercise was fraudulent from beginning to end. So to see examine Form 45 and Form 47, all this is meaningless talk. You must have totally fresh elections. Otherwise, if you don't do that, let me tell you, you are going within a few months to start having guerrilla war in Pakistan. The people will get weapons from China and they will start attacking the families of the army officers. These generals think that they are safe, but the families are not safe. They all have wives and children. Now, supposing the wife of an army officer goes for shopping or for some social visit, she may be attacked because people whose um, relatives have been killed or disappeared or brutally tortured, they want revenge. And the revenge may take place in this way that the wives may be attacked or the children, he is going to school, he may be attacked. Not that I'm approving of it, but guerrilla war is a very dirty war. It's not a conventional war under the Geneva Convention. It is not a war Sir, between one army and another army. In guerrilla war, a lot of civilians are also attacked. This is going to happen. These army generals think they are too clever, that they have pointed a gun at the people and people will remain cowed down forever. They are mistaken. The people will get guns from China or somewhere and then start attacking the wives and children of these army officers. This is all going to develop, I'm afraid, unless fresh elections are held. Because fresh don't you think, elections sir? are the only way to have peace and stability in Pakistan. Don't you think, sir, that if the establishment gives the opportunity to Imran Khan to establish his government and the economic turmoil, instability we are suffering in Pakistan, if he is given the opportunity to get it, you know, show his performance, he'll himself come into difficulties and his reputation will be mitigated or will be, lessened. And automatically he'll be disapproved by the masses because the situation, whosoever takes this government at the current scenario, he will have to face their challenges. See, you must understand the difference between Imran Khan on the other hand and the leaders of PMLN and PPP on the other hand. Imran Khan is basically an honest man, and that is why I support him. I have no connection with him. I'm not related to him. I'm not of his caste, and I don't expect anything from him. I've never met him. But I will support every honest person. And basically, he's an honest person. I mean, he could have lived a life of comfort in England if he wanted to. But instead, he has come to Pakistan to serve the people of Pakistan. He has built up that
excellent cancer hospital called Shaukat Khanum, and did many other good things. And he is living in Pakistan, not running away to England like Nawaz Sharif. Imran Khan is very much here. He hardly has any foreign assets. This talk of Tosha Khana and all this is trivial compared to the loot by these PMLN people. In the Panama Papers, it was disclosed this Nawaz Sharif and his daughter Mariam Sharif, they have looted Pakistan. They have 4 luxurious flats in London and God knows what all property in foreign countries. And this Asif Zardari was known as Mr. 10%. These are gangsters. They are a gang of dacoits. And compared to him, Imran Khan basically is an honest man. And of course, there will be huge problems. There's a huge economic crisis in Pakistan, but at least you will have a leadership which is honest, which will not further uh, increase the crisis because he will not loot Pakistan. So, compared to others, he is the best bet in Pakistan today. You're very right, sir. And now you tell me that what is happening on the international front? The Israel and the Palestinian war, which is going on, the will it end? Does it have an international solution to end this war, or it will continue? See, before I answer this, let me tell you something about Israel. Can you give me 2 minutes time? You have all the time, sir. All right. Now, please first understand Israel. How was it created? See, people say that the Jews were persecuted by the Nazis and many of them were killed in gas chambers, so they needed their own homeland and all that. But that is all sentimental talk. The truth is that in the first half of the 20th century, a huge amount of oil deposits were found in the Middle East. Huge amount and lying just below the surface of the earth. And all that oil was required by Western industries because Western industries were growing. So the Westerners created Israel as a Western armed outpost, a Western military camp in the Middle East to secure the safety of the oil supplies from the Middle East to the West. Israel is really an armed military camp whose purpose is to ensure the safety of the oil supplies from the Middle East to the Western countries, particularly USA. This is the reality about Israel. In fact, every adult is a soldier. He may be a civilian in normal life, but if some war takes place, immediately he gets transformed into a soldier because they have all been given military training and they have weapons. So Israel is nothing but an armed camp, and it was created by driving out the Arabs from that area. Before 1948, the position was 90% of the people living in this territory, which is called Israel, were Arabs. 90%. Then, when it was decided to create Israel, then these Israelis they attacked, killed many Arabs, and others fled out of fear. Uh, Today, hardly 20% of the population of Israel is Arab. So from 90%, it went down to 20%. That is known as the Nakba, the Exodus. And many people were killed, their houses destroyed. These Arabs, and some fled to what is Gaza today, some fled to Jordan and West Bank and uh, Lebanon. So they were living for long in horrible conditions even today. Particularly, for example, in Gaza, people are living in horrible poverty, more than 50% unemployment, hardly any medical care, and so on. So, a time comes when people will hit back. This is what was really done by this Hamas.
when the Hamas attacked Israel, it is a reaction to 70 years of continuous atrocities on the Arabs by the Israelis. A time comes when you can't take it anymore. You also want revenge. You want to hit back. You have been driven out of your homeland, living in horrible conditions. So uh, that is why the Hamas attacked Israel. Of course, they may have committed some excesses in Israel, but what has Israel done in reaction? Israel has launched a massive invasion of Gaza, killed tens of thousands of people, including children, women, who had nothing to do with Hamas, who are leading just ordinary lives. So much atrocities have been committed by Israel. This is the truth about uh, this situation in this Middle East. The Westerners all support Israel, but the truth is that Israel itself is a fake country. Like, for instance, pardon me for saying so, I regard Pakistan also as a fake country. Pakistan is no country. It was created um, by partition on the basis of a two-nation theory that Hindus and Muslims are two separate nations. This is a bogus theory. Pakistan is part of India and is bound to reunite with India, but under a secular government. You see, the typical technique of the British was this: that after Second World War, they realized that the colonial era has gone. The era of direct rule has gone. And England had occupied so many countries. So what they would do is, when they left a country, they partitioned it. Like India was partitioned between India and Pakistan, an Islamic state on theological ground. Same was done in Ireland. Ireland is next to England. When the resistance movement was started in Ireland, then the Britishers, before withdrawing, they partitioned Ireland. North Ireland is Protestant, South Ireland is Catholic. Same thing they did in Palestine. But earlier, Palestine was under the British. Then that was partitioned through the United Nations. Jewish state Israel was created. Arab state Jordan was created, again on religious basis. Or for example, in Cyprus again partition. The north of Cyprus is is Turkish, and south of Cyprus is Greek. Again, because Greeks are Christians. Again, people divided on religious lines. So this was a typical technique of the Britishers, that when they would leave a colony, before leaving they would partition it on religious lines so that people keep fighting each other. Same thing has happened in this Palestine. And the only solution to this problem in Palestine is reunification of Israel, Jordan, West Bank, Gaza, uh, then Lebanon, all under a secular state with modern minded leaders and with all people having religious freedom. This is the only solution, but that is going to take time. Just like reunification of India is going to take time. We are bound to be reunited. India, Pakistan, Bangladesh are really one country sharing same culture. We were one for 500 years from the time of Mughal Emperor Akbar. अब जैसे मैं आपसे हिंदुस्तानी में बात कर रहा हूँ, आप समझते हैं ना, जिसको आप उर्दू कहते हैं, हम हिंदी कहते हैं, मगर वाकई में ये जुबान है हिंदुस्तानी. आप समझते हैं, मैं समझता हूँ. तो हमारी काफी हद तक जुबान एक है, कल्चर एक है, हमारी देखने में एक जैसे लगते हैं, और सैकड़ों साल से हम लोग एक हैं. ये तो अंग्रेजों की बदमाशी थी, चाल थी हम लोग को लड़वाने की. हिंदू मुसलमान लड़ते रहे कि उन्होंने ये पार्टीशन किया. तो इसी तरीके से ये बदमाशी थी कि पैलेस्टाइन को सेपरेट कर दिया इनटू इजराइल एंड जॉर्डन. वहां तो ऑफ कोर्स द रीजन वाज द ऑयल, because a huge amount of oil was discovered in Middle East, which was needed by Western industries.
तो उन्होंने ये इजराइल स्टेट क्रिएट किया, बिल्कुल फेक फर्जी स्टेट है, जैसे आपका पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान फर्जी मुल्क है वैसे इजराइल फर्जी मुल्क है। तो इजराइल को सर, क्रिएट करने का पर्पस था कि एक मिलिट्री आर्म कैंप रख दिया जाए इन द मिडिल ईस्ट ऑफ इन द मिडिल ऑफ द मिडिल ईस्ट, so as to make sure about the oil supplies from the Middle East to the Western countries. This is the real एंड purpose of creating Israel. लेकिन जो प्री पार्टीशन डेज थे इंडिया और पाकिस्तान के, उसमें इन मुस्लिम्स के साथ काफी क्या कहते हैं, मेल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, काफी झगड़े हुए, जलियांवाला बाग हुआ, और उनको वो आज़ादी नहीं दी गई अपने आप के रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, जो अभी भी है आरएसएस जो कर रही है। जिस तरह के वो उनके साथ मुसलमानों के साथ रवैये हैं उनकी, अभी आपने रिसेंटली एक मस्जिद को गिराकर हिंदू टेम्पल बन गया है, बाबरी मस्जिद को गिराया, वहाँ हिंदू टेम्पल बन गया है। तो these things do not you know create contention in the hearts of people who are in minority and want to live a free life. So these were not the reasons that why Pakistan was made, so that we can practice our religion and our freedom of doing whatever we want under our own concept. Now, may I respond? May I respond? Please go ahead. And please give me some time. देखिए, you have to understand the history of the subcontinent. Before 1857, there was no hatred between Hindus and Muslims. 1857 के पहले बड़ा भाईचारा था. Hindus and Muslims used to live like brothers and sisters. They would help each other. They would participate in each other's festivals. Like Hindus would participate in Eid and Muharram. Muslims would participate in Holi and Diwali. There was no problem. All problem arose after the mutiny of 1857. क्योंकि हुआ क्या कि जो बगावत हुई 1857 में, उसमें हिंदूज एंड मुस्लिम जॉइंटली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश. उससे इतना शॉक हुआ ब्रिटिश को कि आफ्टर सप्रेसिंग द म्यूटिनी they decided that the only way of controlling India is divide and rule and create hostility between Hindus and Muslims, जो नहीं थी पहले. अगर आप ये नोट कर लीजिए, कागज कलम आपके पास हो, जरा नोट करिए, हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म, ये गूगल पे देख लीजिएगा. ये फिर से आई एम रिपीटिंग, नोट करिए, हिस्ट्री इन द सर्विस. देखिए, दो चीजें नोट करिए आप, दो चीजें नोट करिए. एक तो नोट करिए, History? इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म. ये गूगल पे देख लीजिएगा. दिस वाज अ स्पीच गिवन बाय वन Dr. B.N. Pandey, who was a professor of history in Allahabad University and later became governor of Odisha. तो ये उन्होंने स्पीच दी थी इन द राज्यसभा, विच इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. ये गूगल पे मिल जाएगा, हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म. Right, sir. और इसमें आपको मिलेगा रेफरेंसेस ऑफ द लेटर्स व्हिच केम फ्रॉम लंदन, फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया टू द वाइसरॉय इन इंडिया, कि लड़वाओ, हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ. ये वो लेटर्स के सब रेफरेंसेस हैं, इसमें आपको मिल जाएंगे. Right. ठीक है ना. और दूसरा आप नोट करिए, द ट्रूथ अबाउट पाकिस्तान. ये मेरा आर्टिकल छपा था, आपके यहाँ एक अखबार है द नेशन, कई साल पहले, जी सर. द ट्रूथ अबाउट पाकिस्तान.
और तीसरा आप एक नोट करिए, thirdly एक मेरा आर्टिकल था जो छपा ऑन अ वेबसाइट कॉल्ड indicanews.com, आप नोट करिए, इंडिका। indicanews.com अमेरिका वेबसाइट है, उसमें छपा, उसका टाइटल है इंडियन रीयूनिफिकेशन an idea whose time has come. अच्छा, ये लिख लिया आपने? जी सर। देखिए, ये सब जो हॉस्टिलिटी है ये सब आर्टिफिशियली क्रिएटेड थी, पहले कोई हॉस्टिलिटी नहीं थी हिंदू मुस्लिम में। 1857 में जो म्यूटिनी हुई उससे इतने घबराए अंग्रेज कि उन्होंने तय किया that the only way to control India is divide and rule. तो सारे कम्युनल राइट शुरू होते हैं आफ्टर 1857। There were no communal rights before 1857. 1857 के बाद क्या हुआ, अंग्रेज कलेक्टर सीक्रेटली बुलाता था हिंदू पंडित जी को रात को और पैसा देता था और कहता था कल से मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू करो, और इसी तरीके से रात को सीक्रेटली मौलाना साहब को बुलाता था, पैसा देता था और कहता था कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू करो। ये एक चीज करी। फिर एजेंट प्रोवोकेटर्स होते हैं जो किराए के टट्टू, उनको अंग्रेजों ने हायर किया कि जैसे रात को कोई गाय काट के उसका कारकस फेंक दो हिंदू मंदिर में और मंदिर के दीवार पे लिख दो अल्लाह अकबर, या कोई सुअर काट के रात को चुपके से फेंक दो मस्जिद में और लिख दो जय बजरंग बली या जय श्री राम, ताकि हिंदू सोचे सारे मुसलमान बदमाश होते हैं और मुसलमान सोचे सारे हिंदू बदमाश होते हैं। सी पीपल आर वेरी गलेबल, आम आदमी की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इज कैरिड अवे। या फिर देखिए 1909 में मिंटो मोलर रिफॉर्म्स आए, सेपरेट इलेक्टेड्स, कि हिंदू कैन ओनली वोट फॉर हिंदू कैंडिडेट, मुस्लिम कैन ओनली वोट फॉर मुस्लिम, अगेन डिवाइड एंड रूल का हिस्सा। या जैसे ये देखिए, पहले उर्दू वाज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ हिंदू मुस्लिम सिख्स एवरीबॉडी इन इंडिया। मेरे बाप दादा उर्दू ही में लिखते पढ़ते थे, तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने मुझसे बताया कि मैं सारे अपनी तकरीर उर्दू में लिखता हूँ, हम लोग की कॉमन जबान थी, इट इज नॉट लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम अलोन। मगर फिर ये प्रोपेगेंडा कराया गया कि हिंदी जुबान हिंदुओं की, उर्दू जुबान मुसलमानों की, अगेन पार्ट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। या क्रिएट किए गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अरे हाउ कैन अ यूनिवर्सिटी बी हिंदू और मुस्लिम? यूनिवर्सिटी मीन यूनिवर्सल, सबके लिए, मगर अगेन डिवाइड एंड रूल, दिस ऑल वेरियस टेक्निक्स वर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हेट्रेड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। और ये सब करते करते आखिर में पार्टीशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि हिंदू आर सेपरेट नेशन, मुस्लिम आर सेपरेट। दिस इज नॉनसेंस। तब तो फिर आपको हर मुल्क का बंटवारा करना पड़ेगा। तो अमेरिका में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन भी हैं कई किस्म के, रोमन कैथोलिक हैं, हिंदूज हैं, मुस्लिम हैं, सिख्स हैं, जूस हैं। आपको 10-12 टुकड़े यूएसए का भी करिए, इंग्लैंड में इतने सारे रिलीजन हैं, इंग्लैंड के 10-12 टुकड़े करिए, पार्टीशन करिए। फ्रांस में देखिए, हर मुल्क में कई मजहब के लोग रहते हैं, आप मजहब के बेसिस पे आप कोई स्टेट नहीं बना सकते, तो फर्जी चीज है बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे मजहब हैं। तो लिहाजा ये कॉन्सेप्ट ही इट इज रिडिकुलस। मगर ये किया गया ताकि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, अंग्रेजों के जाने के बाद भी हम लोग कमजोर रहे, सारा अपना मनी और एफर्ट वेस्ट करें एक दूसरे से लड़ने के लिए, जबकि हम लोग एक हैं। मैंने देखिए, आई एम पर्सनली एन एथियस्ट, मैं ना गॉड मानता हूँ, ना भगवान मानता हूँ, ना अल्लाह मानता हूँ। I believe all religions are superstitions, but that is my personal belief. You are entitled to follow your religion, and I am a strong supporter of religious freedom. हिंदू चाहे मंदिर जाए, मुस्लिम चाहे मस्जिद जाए, सिख चाहे गुरुद्वारा जाए, क्रिश्चियन चाहे चर्च जाए, he should have full freedom. There should be no interference, and there should be equality between all religions. I am a strong supporter of that.
तो मगर देर आर पावरफुल फोर्सेस विच वांट टू कीप आवर सब कॉन्टिनेंट वीक एंड फाइटिंग ईच अदर। बताइए, इतना खर्चा करते हैं हम लोग बाइंग फॉरेन आर्म्स, तो मल्टी जो फॉरेन आर्म्स कॉर्पोरेशन है वेस्टर्न कंट्रीज की, उनके बड़े सेल्स होते हैं। जो पैसा जाना चाहिए हमारे पीपल के वेलफेयर में, वो जाता है पैसा वेपन्स खरीदने के लिए फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो लिहाजा नाउ कमिंग बैक टू इसराइल, मैंने इसको समझाया, मैंने कई उसमें इंडिका न्यूज डॉट कॉम में वो वेबसाइट में आपको मेरे कई आर्टिकल मिल जाएंगे अबाउट इसराइल। यू जस्ट टाइप ऑन दैट सर्च कॉलम जस्टिस काटजू इसराइल और सब मिल जाएंगे कई आर्टिकल। मैंने कहा इसराइल फर्जी मुल्क है, इट इज नो कंट्री, जैसे आपका पाकिस्तान फर्जी मुल्क है। ये रिलीजन के बेसिस पे आप बना ही नहीं सकते हैं भाई, इट्स नॉनसेंस। तो जानबूझ के हम लोग को आपस में लड़वाने के लिए बनाया गया था। अब देखिए, पहले पाकिस्तानी लोग मुझसे नाराज हो जाते थे। मैंने कहा देखो, मुझे पाकिस्तानियों से कोई नफरत नहीं है, मुझे प्यार है, बिकॉज आई रिगार्ड देम टू बी इंडियन, आई रिगार्ड ऑल पाकिस्तानी टू बी इंडियन। So how can I hate my own countrymen? You are my countrymen. How can I hate you? So it is not to denigrate you, but I must tell you the truth. तुम लोग को बेवकूफ बनाया गया है कि साहब वो हिंदू वो करते हैं। देखिए, नहीं आज की सुनिए, आज की इंडियन गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इट इज कम्युनल, इट इज एंटी मुस्लिम, दैट इज ट्रू, बट अगेन वही डिवाइड एंड रूल चल रहा है। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट। ये बिल्कुल, हमारा सब कॉन्टिनेंट में इतने मजहब हैं, इतने टाइप के लोग हैं, इतनी कल्चर्स हैं, वी मस्ट गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल। आई एम टोटली अपोज दिस पॉलिसी, एंटी मुस्लिम पॉलिसी इन इंडिया। मैं सख्त इसकी मजम्मत करता हूँ। सर, आपकी एक मत करने से ये तो फैक्ट्स नहीं होते हैं, रियलिटी तो नहीं चेंज होती कि देयर सो मच किलिंग्स ऑफ इनोसेंट मुस्लिम्स इन इंडिया, that much is happening. And whereas you look at into Pakistan, we are in majority, very much majority, and hardly you can listen. There's so many Hindus living in our province Sindh, but there is no killing and there is no discrimination. There's so much good businessmen, Hindu businessmen working in Pakistan. Yesterday, I was listening to Mukesh Kumar, our minister for minority. He was so liberally, freely talking against about Muslims. He was given the opportunity to be fully free. So that discrimination is not there. But in India, where the Hindus are in majority, they are marginalizing Muslims, Christians, Sikhs, all of them. So this led to this. You are right. You seems to be very logical that British did all this to divide between the major two religions in Indo-Pak subcontinent. But that division is now so abyss, so deep rooted that I don't think so. It can be they can be reunited, and the ideologies are totally different. The concept is totally different. If you are a practicing Muslim, you cannot just go away with keep along with Hindu practicing Hindu. There's so much distance in both of their thought processes. देखिए, ये सब आर्टिफिशियली क्रिएटेड हेट्रेड है, इट इज नॉट नेचुरल और इनहेरेंट। ये सो कॉल्ड हेट्रेड बिटवीन हिंदू मुस्लिम, इट इज ऑल आर्टिफिशियली क्रिएटेड। मेरे इतने सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, आपको मालूम है जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं उतने ही मुसलमान हिंदुस्तान में भी हैं। यू हैव अबाउट 24 करोड़ पॉपुलेशन, 23 करोड़ मुस्लिम होंगे, हमारे यहाँ भी 23 करोड़ मुस्लिम। और मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और मुझे बुलाते हैं ईद के दिन, इफ्तार पे। आई वेरी गुड एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, जो आई रियली अप्रिशिएट आपके रेहान साहब ने काम किया। इसी व्हाट हैड हैपेंड वाज, मैं 25-30 साल से हर साल रमजान के महीने में एक दिन का रोजा रखता हूं।
not the whole month, 1 month, and usually on the last Friday of Ramadan, और वो भी strictly according to the rules of रोजा. यानी I ask some Muslim friends कि सहरी का क्या टाइम है, इफ्तार का क्या टाइम है, और मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ प्रीवियस डे की फ्रिज में थोड़ा अंडा, डबल रोटी और दूध रख देना, तो सवेरे मानिए 4:30 बजे सहरी है, तो मैं 4 बजे उठ के जल्दी से नाश्ता वाश्ता करा, और 4:30 बजे के बाद विदाउट अ ड्रॉप ऑफ वाटर और ईटिंग एनीथिंग अप टू इफ्तार टाइम आई एम स्ट्रिक्टली फास्टिंग. और मैं अपील करता हूँ, हर साल मैं अपील करता हूँ, अपने फेसबुक पेज पे डालता हूँ अपील, इस बार भी डालूंगा, आने वाली है ईद, शायद रमजान आने वाला. आई अपील टू ऑल नॉन मुस्लिम इन द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली इन इंडिया कि एक दिन का रोजा रखो. नॉट दैट यू आर गिविंग योर रिलीजन, आप अपने रिलीजन पे रहिए, मगर टू शो रिस्पेक्ट टू आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज जस्ट शोइंग रिस्पेक्ट एंड सॉलिडेरिटी विद देम. मेरी अपील है कि एक दिन रोजा रखिए, एंड लॉट ऑफ पीपल फॉलो माई अपील, दे रिस्पेक्ट मी. भाई मैं नहीं कह रहा हूं अपना मजहब छोड़ दो, मैं मुसलमानों से कहता हूं, हर साल मैं मुसलमानों को भी, नवरात्रि हम लोग क्या होता है 9 दिन का फास्टिंग पीरियड, मैं मुसलमानों को अपील करता हूं एक दिन तुम फास्ट रखो. और नवरात्रि फास्ट इज इजियर बिकॉज यू कैन eat and drink also during this fast, but you cannot have cereals, you can only eat fruits. पानी भी पी सकते हैं, जबकि आपका ज्यादा मुश्किल फास्ट है, क्योंकि आपको तो कुछ नहीं खा पी सकते हैं, और गर्मी के महीने में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो योर इज मोर डिफिकल्ट. अच्छा, इस बार मैंने लास्ट ईयर मैंने अपील करी थी टू ऑल द नॉन हिंदूज की, आप लोग सब पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, आप लोग प्लीज सेलिब्रेट करिए दिवाली. ऑल्दो आपके 95% पॉपुलेशन इज मुस्लिम, perhaps 96%, मगर आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी अपील है कि एक दिया रखिए अपने हाथ में दिवाली के दिन. आपके स्वामी ये जो रेहान स्कूल से जो रिस्पॉन्स आया, यू हैव नो आइडिया. dozens of young boys and even the headmaster, क्या है उनका नाम, अल्ताफ एजुकेशन वाला प्रिंसिपल जो है, उन्होंने भी जी मुझे सर. फोटोग्राफ भेजी, एक दिया अपने हाथ में लिए हुए. मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, आई पोस्ट इट टू यू. आप अपना ईमेल आईडी मुझे कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा. तो मैंने, राइट सर. तो बहुत सारे लोगों ने आपके प्रिंसिपल ने भी और स्टूडेंट्स ने मेरी अपील को एक्सेप्ट किया, और रात को एक दिया जलाया, अपने हाथ में रखा, उसकी पिक्चर मुझे भेजी, जो मैंने फेसबुक पे डाल दी थी. तो दैट वाज ट्रेमेंडस ग्रेट अचीवमेंट टू शो कि देखिए आप 96% मुस्लिम हैं, येट यू आर सेलिब्रेटिंग अ हिंदू फेस्टिवल. देखिए ये स्पिरिट होनी चाहिए. देखिए जो पास्ट में हो गया उसके बारे में रोने धोने से फायदा नहीं है. वी हैव टू लुक एट द फ्यूचर. कोई इनहेरेंट हॉस्टिलिटी नहीं है. मैं आपको बताऊं, मेरे कई हिंदू फ्रेंड्स जाते हैं पाकिस्तान, हिंदू फ्रेंड्स, और लौट के जब आते हैं मुझे बताते हैं कि इतना प्यार मोहब्बत मिला, इतनी हॉस्पिटैलिटी मिली, लव एंड अफेक्शन मिला, दे कुड नॉट डिस्क्राइब इट. और वही होता है, आपके पाकिस्तानी लोग जब इंडिया आते हैं, यू गेट द सेम लव एंड अफेक्शन हियर. तो कोई हॉस्टिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है. पोजीशन क्या है, देखिए पीपल जो हैं दे लव ईच अदर, बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी. इट इज द गवर्नमेंट विच आर हॉस्टाइल. हमारी भी गवर्नमेंट और आपकी गवर्नमेंट इज रियली योर आर्मी, तो दे आर हॉस्टाइल टू ईच अदर. मगर पीपल के लेवल पे देयर इज नो हेट्रेड, वी रिस्पेक्ट. भैया आपको नमाज पढ़ना है, पढ़िए, क्या है, मुझे क्या दिक्कत है भाई. अगर आप नमाज पढ़ ले तो मेरी मेरी जेब से क्या जाता है भाई. तो सिमिलरली हिंदू अगर मंदिर जाए, आपके जेब से क्या. अरे भाई, वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर रिलीजन. मैं पर्सनली तो एथियस्ट हूं ना, मैं हिंदू मतलब फॉलो करता हूं ना मुस्लिम. आई बिलीव इन साइंस, माय रिलीजन इज साइंस, बट हाउएवर आई एम नॉट टेकिंग माय ओन पर्सनल एग्जांपल. मोस्ट पीपल आर रिलीजियस एंड दे शुड हैव अ राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन. कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी, कोई हेटेड वेटेड नहीं है. देखिए ये सब फर्जी प्रोपेगेंडा है कि हिंदू मुसलमानों से नफरत करता है.
मुसलमान हिंदू से नफरत करता। देखिए हमारे क्या है, जो बीजेपी है, जो पावर में है गवर्नमेंट इंडिया में, दे नो 80% पॉपुलेशन इज हिंदू। तो अगर वो कम्युनल पैशन अराउज करें, जैसे अक्सर करते हैं भाई, डिमोलिशन बाबरी मस्जिद एंड ब्रेकिंग मस्जिद एंड ऑल दैट, उससे हिंदूज हु आर अदरवाइज डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइंस, दे गेट कंसोलिडेटेड। एंड बिकॉज 80% पॉपुलेशन हिंदू है, तो ये विनिंग फॉर्मूला है इलेक्शन जीतने का। आप समझे ना, ये इट्स नॉट फॉर विनिंग इलेक्शन, ये सब स्टंटबाजी है। वो राम मंदिर, अरे राम मंदिर बनाने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गुर्बत खत्म हो जाएगी? आप जानते हैं इंडिया में 50% ऑफ आवर चिल्ड्रन आर मेल नरिश्ड। अगर आप जाइए गूगल पे, यू जस्ट टाइप ग्लोबल हंगर इंडेक्स, एंड इन इंडिया half of our children are malnourished, many stunted, um, underdeveloped, or 57% of our women in India are anemic. कितना मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है। एक गवर्नमेंट चपरासी की नौकरी के लिए हजारों, क्या ऑलमोस्ट 40-50 हजार एप्लीकेशन आ जाते हैं चपरासी की नौकरी के लिए। एंड मेनी ऑफ द एप्लीकेंट्स आर पीएचडी इंजीनियर्स, एमएससी, एमबीए। इतना मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, आपके पाकिस्तान में भी यही हाल होगा। तो हमारे प्रॉब्लम तो कॉमन है भाई, वी शुड बी हेल्पिंग ईच अदर इंस्टेड ऑफ हेटिंग ईच अदर। आप समझिए, जो दो गरीब आदमी हैं, वो अगर ऐसे लड़ेंगे एक दूसरे से, तो फायदा किसको होगा? रिच मैन विल बेनिफिट, उसका इंटरेस्ट है लड़े ये लोग। वी आर एक्चुअली वन कंट्री है, ये सब बोगस है। मैं हर पाकिस्तानी को इंडियन मानता हूँ। और मैं अगर आप 2 मिनट मुझे टाइम दें, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर 2 मिनट मुझे आप वक्त दीजिएगा। सर आपके पास पूरा दिन है, डोंट वरी। अच्छा सुनिए, अब बड़ा मजेदार चीज सुनिए आप। मैं बाद में तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, मगर एक जमाने में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज था। इलाहाबाद में मैं पढ़ा और लॉयर बना और जज बना 1991 में। अच्छा, मैं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज था, मेरे सामने कई पिटिशन आई ऑफ पाकिस्तानीज who had come on a 1 month visa to India to meet their relatives and friends. कई, यानी कम से कम 15-20 पिटिशन आई ऐसी कि उनको 1 महीने का वीसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, और वो आए, मगर वो वापस नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि भाई वो अपनी जवानी में चले गए थे पाकिस्तान में, किसी मजहबी जोश में या डर के मारे। मगर अब वो ही ओल्ड पीपल 60-70 साल के हो गए हैं। उनके तमाम रिश्तेदार हैं यहाँ पे इंडिया के टाउन्स में। अब वो आए हैं उनके से, अब वो 1 महीना बीत गया, वीसा एक्सपायर हो गया, वो वापस ना जाए, तो डिपोर्टेशन ऑर्डर आया, ही शुड बी डिपोर्टेड टू पाकिस्तान। तो उन्होंने वो चैलेंज किया बाय फाइलिंग रिट पिटिशन बिफोर मी। अच्छा, हर ऐसी पिटिशन में कम से कम 20-25 पिटिशन होंगी, मैं एक कॉमन ऑर्डर पास करता था। वो ऑर्डर था, until further orders the petitioner will not be deported from India। अच्छा, ये ऑर्डर मैंने कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हियरिंग इसकी होगी 4-5 साल के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा केसेस हो गए, मैसिव पेंडेंसी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे ख्याल में 15 लाख केसेस की पेंडेंसी हो गई होगी। तो लिहाजा एक केस टेकअप हो तो नेक्स्ट उसकी हियरिंग 4-5 साल के बाद होगी, और तब तक मेरा ऑर्डर कंटिन्यू करेगा। तो जो 1 month वीसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, बाय माय जुडिशियल ऑर्डर आई कन्वर्टेड इनटू 4 or 5 months वीसा। until further order he will not be deported। और वो केस लिस्ट होगा 4-5 साल के बाद। अच्छा, क्यों किया मैंने ऐसा? अब सोचिए, मैंने ये लिखा नहीं, लिखा तो इतना ही मैंने कि until further order petitioner will not be deported from India। But you know what was the real reason? Real reason was कि I regard every Pakistani as an Indian। तो एक इंडियन इंडिया आया है, तो हाउ कैन ही बी डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया? दिस इज द रियल रीजन। आपको मैं आई एम रिवीलिंग इट,
जो मैंने रिवील नहीं किया पहले, क्योंकि मैं हर पाकिस्तानी को इंडियन मानता हूँ। तो वो एक इंडियन इंडिया में आया है, तो इंडिया से कैसे वो एक्सपेल हो सकता है? तो मैं, अच्छा, दे वो ओल्ड पीपल, अब वो 70 साल के बुजुर्ग आदमी, अब वो गए थे 20 साल की उम्र में, चले गए थे पाकिस्तान। वो थोड़े से जोश में, मजहबी जोश था, और डर भी था कि यहाँ पे मार डाले जाएंगे, या जो चले गए पाकिस्तान। अब ओल्ड एज में उनको याद आ रही है, अपना गांव याद आ रहा है, अपना शहर याद आ रहा है, तमाम रिश्तेदार हैं यहाँ पे। अब वो चाहते हैं मेरा कब्र यहीं बने, मेरे बाप दादा का कब्र यहाँ है, तो मेरा भी यहीं बने। इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ। बट पार्टीशन पे तो बड़ी किलिंग्स हुई है, मुसलमानों को बहुत मारा गया, कहीं पूरी। ये सब जहर फैला। अब मैंने आपको बताया, 1857 के बाद this poison was injected into our social fabric year after year, decade after decade. अंग्रेजों ने वेरियस वेज हम लोग में नफरत फैलाई, जबकि 1857 के बाद करते थे, कोई कम्युनल राइट आप नहीं before 1857. The whole mischief started from 1857. आप मेरा आर्टिकल पढ़िएगा, वो BN पांडे का पढ़िएगा, और जो वेबसाइट पे indicanews.com पे, कि इंडियन reunification, an idea whose time has come. We are one country, we are bound, we have to reunite and emerge as a modern industrial giant, but under leadership of modern minded people, not these religious bigots. There I agree with you. I'm totally against these religious bigots. बट उसमें वक्त लगेगा। हम लोग रियूनाइट तो होंगे, वी आर वन कंट्री, वी आर बाउंड टू बी रियूनाइटेड, मगर वक्त लगेगा उसमें, क्योंकि जो जहर बोया गया है एक दिन में तो जाएगा नहीं। जिन लोगों ने हमको डिवाइड किया, वो हमको आसानी से यूनाइट नहीं होने देंगे, ये भी समझ लीजिए। मगर हमें यूनाइट तो होना ही है, अदरवाइज वी आर वेस्टिंग ऑल आवर मनी एंड एनर्जी इन फाइटिंग ईच अदर। ये पार्टीशन नकली था, ये कोई पार्टीशन, ये फ्रॉड था, जैसे पैलेस्टाइन का पार्टीशन। सेम थिंग, आई कंपेयर पाकिस्तान विद इजराइल। आप भी एक इसमें थियोक्रेटिक स्टेट बनाए गए, वो इजराइल भी थियोक्रेटिक। यू कैनॉट हैव अ थियोक्रेटिक स्टेट बिकॉज देयर आर सो मेनी रिलीजन इन एवरी कंट्री, हो ही नहीं सकता है। आप समझे ना? Because I really respect my founder of Pakistan, Mr. Qazi Ali Jinnah, Muhammad Ali Jinnah, and he was a very disciplined, and he uh, really contested for Pakistan, and he was a very polished personality, a very upright personality. His views and his speeches clearly states that the country was made for the people who want to live freely and who want to practice their religion, and all the religions can practice their religious views freely in Pakistan. And he wanted to make a Islamic state, and we are a Islamic Republic of Pakistan, and we are also called the Court of Islam. And though our governments have failed to prove what our ideology was in order to execute that, but still we really respect the views, and that's why we are Pakistani and proud Pakistani. May I answer? May I answer this? देखिए, जिन्ना हो या गांधी हो, they were all British agents, objectively British agents, and I will want to tell you how. ये पूरा जो टू नेशन थ्योरी अंग्रेजों की चाल थी। देखिए, जिन्ना के बारे में आपको बताऊं कि एक जमाना था जब जिन्ना वाज सेक्युलर एंड पेट्रियोटिक। वो 1917 में उसने लखनऊ पैक्ट किया था। ही वाज नोन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी और व्हाट नॉट। उस टाइम सेक्युलर और पेट्रियोटिक थे जिन्ना, 1917 टू 1924 और सो। उसके बाद ये मिस्टर गांधी आए। गांधी हैड प्रैक्टिस लॉ फॉर 20 years in South Africa. Then in 1915 he came to India.
and he took over leadership of the Congress party. And गांधी क्या करें, तकरीबन हर स्पीच में, आर्टिकल में आप देख लीजिएगा, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, विच इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन इन मेनी वॉल्यूम्स, हर आर्टिकल स्पीच में क्या बात करें गांधी? ही वुड टॉक ऑफ रामराज, एस्टेब्लिशिंग रामराज. he would he would talk of one ashram caste system. He was a strong supporter of caste system. He would talk of cow protection, cow must be protected. ये सब हिंदू आइडियाज आप देखिए. उस टाइम जिन्ना ने कहा है, मिस्टर गांधी ये क्या कर रहे हैं आप, वाई आर यू इंजेक्टिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स? क्योंकि ये सब आप हिंदू रिलीजन इंजेक्ट करें एज ए पॉलिटिकल लीडर. देखिए आप अपने घर में बैठ के जो चाहे करिए, या आप अगर साधु महात्मा है अपने आश्रम में जो चाहे करिए, बट वंस यू एंटर इनटू पॉलिटिक्स, then to inject religion into politics in a country where there's so much religious diversity, it is serving the British interest of divide and rule. तो जो जिन्ना एक जमाने में पेट्रियोटिक था, सेकुलर था, जैसे अल्लामा इकबाल पहले पेट्रियोटिक और सेकुलर थे. जो उन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो 1904 में लिखा. बट अल्लामा इकबाल 1905 में इंग्लैंड गए और 3-4 साल रहे, वहां से लौटे तो बिल्कुल कम्युनल हो गए, टोटली सपोर्टिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया. वो उनकी जो है शिकवा पोएम है बड़ी मशहूर, और यानी पैन इस्लामिक यूनिटी, नॉनसेंसिकल आइडिया. एंड वो इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग में उन्होंने कहा कि पार्टीशन होना चाहिए. तो जब पर्सन लगता है कोई अंग्रेजों ने इंग्लैंड में इन पे प्रेशर डाला कि यू बेटर स्टॉप प्रीचिंग पेट्रियोटिज्म अदरवाइज यू गेट इनटू ट्रबल. ये अंग्रेजों की चाल थी. तो जो पेट्रियोटिक और सेकुलर आदमी थे अल्लामा इकबाल, आगे चल के वो स्ट्रांगली इन सपोर्ट ऑफ मुस्लिम सेपरेशन. और यही जिन्ना साहब पहले जो ही वाज सेकुलर एंड पेट्रियोटिक 1917 से 24 तक. उसके बाद वो लगता है गांधी जी ने से नाराज हो गए, क्योंकि गांधी वो प्रीचिंग हिंदू आइडियाज इन पब्लिक स्पीचेस. तो नाराज होके जिन्ना चलेगा इंग्लैंड. कई साल वकालत करी उन्होंने इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में, मगर लौट के आए तो ही बिकेम टोटली कम्युनल. और लाहौर रेजोल्यूशन 1940 का, ही हैड बिकम अ ब्रिटिश एजेंट. तो ये सब एजेंट्स थे ऑब्जेक्टिवली, चाहे जिन्ना चाहे गांधी, ये सब ब्रिटिश एजेंट्स थे. ब्रिटिश वर यूजिंग देम फॉर देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड फॉर द टू नेशन थ्योरी. ये आप लोग को देखिए, ये आप लोग को किसी ने बताया नहीं, हकीकत किसी ने बताया नहीं. आप लोग कहते हैं हिंदू बहुत हमको परेशान करते हैं. कौन मैं आपको परेशान करना हूँ? अरे भाई, जो अभी गवर्नमेंट है इंडिया की, इट इज बिकॉज टू विन इलेक्शंस. जैसे अभी हमारे यहाँ 2024 में चुनाव आने वाला है विद इन अ फ्यू मंथ्स. अब देखिएगा होगा क्या कि कुछ मस्जिद गिराए जाएंगे, जैसे एक वहां बनारस में ज्ञान वापी मस्जिद. अब वो उस पे हल्ला हो रहा, उसके अंदर उसके बेसमेंट में वो हिंदू पूजा शुरू हो गई. और आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि बहुत जल्दी उसको एक मॉब आएगी और गिरा देगी, क्योंकि यूपी, दैट बनारस इज इन यूपी एंड यूपी इज अंडर बीजेपी रूल. चीफ मिनिस्टर लेकिन सर योगी ये आदित्यनाथ. मतलब, आई एम सॉरी, आई एम इंटरफेयरिंग. ये मस्जिद गिरा देना और मस्जिद को डिमोलिश करना, फॉर अस इट इज वेरी सेक्रेड. इन अ मॉस्क इज वेरी सेक्रेड फॉर अस, और इट इम्पैक्ट्स अस, and that, incites curiosity in us. So it is आई not एग्री विद easy यू. to digest that हमारी जो वर्शिप प्लेसेस हैं अगर उसको डिमोलिश करते हैं. That's why we separated. मेरी बात तो सुनिए ना, ये सब पॉलिटिक्स है. यूपी में Muslims are only about 18% of the population, 18%, और बाकी 82% ऑलमोस्ट ऑल हिंदूज. तो अगर मस्जिद गिराया जाए, मोस्ट हिंदू विल बी वेरी हैप्पी. ये मतलब ये सब पॉलिटिक्स है. इट इज ऑल फॉर द कमिंग इलेक्शन. आप समझे ना, इसको समझने की कोशिश करिए. ये तो मालूम है मुझे कि
Muslim will be very offended. I agree. न मस्जिद गिराया जाना चाहिए, न मंदिर गिराया जाना चाहिए. We should respect each other. मगर जो पावर्स हैं, they want to win elections. और इलेक्शन जीतने के लिए हर हथकंडा यूज होगा. कहते हैं ना, all is fair in love and war. तो इलेक्शन are also a kind of a war. Everything will be used. हमारे यहाँ कहते हैं साम दाम दंड भेद. All kinds of techniques and strategies will be used to winning the election, including demolition of masjids. राम मंदिर बनाया गया, कितने नौकरियां मिल गई? क्या हिंदुस्तान की बेरोजगारी खत्म हो गई? राम मंदिर जो अयोध्या में बना दिया गया, या बेरोजगारी खत्म हो गई, गुर्बत खत्म हो गई, भुखमरी खत्म हो गई? It was all a stunt. But many most Hindus are, because they are gullible. Ordinary man is a gullible person. चाहे ordinary Hindu हो, चाहे ordinary Muslim. They are emotional people, not rational. They are swayed away by these sentiments कि देखिए क्या हमारी मंदिर बन गया अयोध्या, रामचंद्र जी के बर्थ प्लेस. Uh, you, sir, really, all those listeners will be really, enchanted by your talks because I'm going to share it with people who really like such kind of conversation, especially from a person like you who is so well informed, educated, and I have a very significant point of view. Normally, we do not hear such kind of thoughts from people, and you have a lot of study of history. You have a lot of command on history, Indo-Pakistan history, and world history, and world, international politics also. So my last question from you is that Yeah. what future do you see? Can you give number of years when, according to you, uh, Pakistan, if it's possible, if there is a future for Pakistan, a better economy, a better governance, do you see in Pakistan a better future or a better government or governance? देखिए, आंसर एक तो शॉर्ट टर्म आंसर है, एक लॉन्ग टर्म आंसर है. शॉर्ट टर्म आंसर Long इज, term. पहले शॉर्ट टर्म बता दूं, फिर लॉन्ग टर्म भी बताता हूँ. शॉर्ट टर्म Yes, sir, आंसर इज please. कि हैव टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन. ये 8 फरवरी का इलेक्शन बिल्कुल शैम और फ्रॉडुलेंट था. इसको दिस शुड बी रिजेक्टेड. और फ्रेश इलेक्शन अंडर यूएन सुपरविजन और सम रेप्यूटेड इंटरनेशनल एजेंसी के सुपरविजन में हो, विद आर्मी बीइंग केप्ट इन द बैरक्स. एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसमें इमरान खान की पार्टी इज बाउंड टू विन बिकॉज दे हैव सपोर्ट 89. अदरवाइज देयर विल बी नो स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, बल्कि सिविल वॉर और गुरिल्ला वॉर शुरू हो जाएगी. लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, उसका भी मैंने आपको जिक्र कर दिया. लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज reunification of India, Pakistan and Bangladesh under a secular. अरे हंसिए नहीं साहब, ये होने जा रहा है, inevitable. We are one country. आप समझते नहीं है. आप लोग के मन में, मैं तो कहता हूँ, जब बुरा न मानिएगा, कि आप लोग के मन में और हमारे इंडियंस के भी मन में गोबर भर दिया गया, भूसा भर दिया गया. कोई आपको समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है. बेवकूफों जैसे हमारे इंडियन की बात करते हैं, आपके पाकिस्तानी बात. मैं सही बात बता रहा हूँ, तुम्हें सच्ची चीज बता रहा हूँ. इसको सोचो मेरी बात में. ऐसा नहीं कि एकाएक मेरे मन में कोई वहम आ गया. ये नहीं सर, आपके मैंने तो आपको यही तो कह रहा हूँ कि आप ब्रिलियंट, आपकी सोच है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है बिकॉज हमारे भी काफी रीजंस कोई हैं कि नहीं, हम अपनी कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता है. कंट्री दो मिला के क्या होता है, आप कहेंगे सब दो पांच भी हो सकता है, दो दो मिला के 3 भी हो सकता है. आई विल से नो. एक ही आंसर है, दो मिला कर. ये मत कहिए कि कई आंसर हो सकते हैं. दूसरों की ओपिनियन भी सोचनी चाहिए कि कोई दो मिला के 5 कहे, 6 कहे. मैं सब ये सब चक्कर में नहीं पड़ता हूँ. सीधे आई बिलीव इन स्ट्रेट थिंकिंग. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इज वन कंट्री. They are bound to reunite, but
It must be under a secular government with modern-minded leaders who uphold religious freedom, and it is going to take time. क्योंकि जिन्होंने हमको डिवाइड किया वो आसानी से हमें रियूनाइट नहीं होने देंगे. इसके लिए बड़ा स्ट्रगल वेट करना पड़ेगा जो 10-15 साल 20 साल लग सकता है. बट रियूनाइट तो होंगे. जैसे वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी रियूनाइटेड आफ्टर 45 years पार्टीशन. रियूनाइट हुआ कि नहीं हुआ? या वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम रियूनाइट हुआ. चाइना ने अभी तक ताइवान को नहीं माना. तो लिहाजा जो लोगों ने पार्टीशन कर दिया वो तो अपना उनका एम था, अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट था. मगर हमारा एम है वी मस्ट reunite under secular modern-minded leaders who are determined to rapidly industrialize this whole region and give our people prosperous lives, decent lives, and raise their standard of living. That is only possible when there's rapid industrialization throughout this subcontinent. And India emerges as a modern industrial giant like another China. We have all the potential. I tell you, मैं बहुत जाता हूँ अमेरिका, And मेरे बच्चे हैं. sir, तो वहां one पे thing, my one question: if this reunification happens, we can name this place a reunited Pakistan, not करिए. India. We can name it Pakistan. मैंने कहा, कुछ लोगों ने मुझसे कहा जब मैंने ट्विटर पे डाला कि साहब रियूनाइटेड इंडिया इंडिया नाम नहीं होना चाहिए. मैंने कहा आई एग्री. रियूनाइटेड कंट्री का नाम पाकिस्तान रख दो. provided it would be a secular country, neither Hindu state nor Islamic state, secular state having no religion. Privately आप जो religion पे चलना चाहें चले, but it must लेकिन be a ये तो secular country. तो मुस्लिम्स के लिए तो एक लॉस होगा ना कि उनका एक सेपरेट स्टेट, एक मुस्लिम स्टेट जो है वो क्या कहते हैं, डिवॉल्व हो जाएगा. हाँ, एक अरे डिवॉल्व हो सेपरेट जाएगा. स्टेट, अरे भाई क्या कुछ समझो. देखो एक चीज, लेट मी टेल यू नाउ वेरी फ्रैंकली, the test of every public activity is one and only one, and that is, does it raise the standard of living of the people? Does it give them better lives? आपके पाकिस्तान बनाने से 1947 में क्या गुर्बत खत्म हो गई? अबे सुनो, पूरी बात सुनो यार, तुम सुनते हो नहीं. देखिए, द टेस्ट इज द इकोनॉमिक टेस्ट. 1947 में बंटवारा से क्या गुर्बत दूर हो गई, बेरोजगारी दूर हो गई, भूखमरी. आज आपका पाकिस्तान में क्या हाल है? मैं यूट्यूब में बहुत देखता हूँ. आई एम सो सॉरी फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान. बेचारे क्या सफर कर रहे, जिन्हें खाना नहीं ठीक से मिलता, इतना महंगा हो गया. महंगाई इतनी कहाँ किस हाई लेवल पे पहुंच गई. कैसे गुजारा चल रहा है घर का, किस गुर्बत में रह रहे हैं. आप तो सब जानते हैं, आप वहां रहते हैं. वह कितनी टेरेबल. ये आपका इस्लामिक स्टेट है. तो खाइए अपना. अब रोटी मत खाइए, इस्लामिक स्टेट खाइए. You should not be given any bread, just be given Islamic State. It's nonsense. आदमी रोटी खाएगा कि इस्लामिक स्टेट? ये सब आपको बहकाने की बातें हैं कि आप बड़ा मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है. कोई जुल्म नहीं है. ये सब इट इज ऑल पॉलिटिक्स इन ऑर्डर टू स्प्रेड हेट्रेड, पोलराइज सोसाइटी. ये पूरा खेल है. मेन प्रॉब्लम आपकी हमारी एक ही है, दैट इज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये हंगर, healthcare. Healthcare is almost non-existent in India for the poor people. जी हाँ, एक मिनट, एक टेलीफोन आ रहा है. हेलो हेलो, यस, कौन है? हाँ 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 ब्रदर बोले. थैंक यू ब्रदर, सो काइंड ऑफ यू. थैंक यू. ओके, थैंक यू. हाँ सॉरी. हाँ, तो देखिए, प्रॉब्लम हमारे एक ही इतने नॉट. ये सब नॉनसेंस है कि हम वहाँ रिलीजन नहीं प्रैक्टिस. अरे रिलीजन पहले तो पेट में रोटी जानी, तब तो रिलीजन प्रैक्टिस करोगे. मस्जिद जाने के लिए पहले पेट में रोटी तो होनी चाहिए. क्या करोगे मस्जिद जाके अगर भूखे हो? बेवकूफी की बात आप कर रहे हैं. द प्रॉब्लम इज द सेम विद इन योर कंट्री एंड माय कंट्री. vast majority, over 75-80%, are suffering from horrible poverty,
हॉरिबल अनएम्प्लॉयमेंट, मैसिव, यानी इंडिया में रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। कितना वो हेल्थ केयर, यानी आप समझिए गरीब आदमी को प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिलती है हिंदुस्तान में। एक तो हाँ, जो रिच लोग हैं दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स, बहुत फर्स्ट क्लास इंडिया दिल्ली में हॉस्पिटल्स हैं, बट दे आर नॉट एक्सेसिबल टू द पुअर मैन। तो वो बेचारा क्या करता है, ही गोज टू क्वैक्स, जिसको कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, इन नॉट द रेगुलर डॉक्टर्स, बट वो फर्जी फर्जी डॉक्टर जिनको कहते हैं क्वैक्स, उनके पास जाता है। दे हैव 5 times more quacks than regular doctors, maybe I 10 can times more। understand. गरीब आदमी जा ही नहीं सकता है रेगुलर डॉक्टर के पास, उसके पास पैसा नहीं है। सोचिए जो Thank you. हाल है, ये समझिए आप तो भाई हिंदू मुस्लिम आप भी करते रहते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ भी करते रहते हैं, किसा ये हो गया मंदिर मस्जिद हो। अरे यार, जो बेरोजगारी की बात करो, महंगाई की बात करो, भुखमरी की बात करो, गुर्बत की बात करो, उस पर बात नहीं करेंगे तो ये फिजूल की बातें आप लोग करते चले। Sir, I hope none of my statement antagonized you or hurt you, and No, it no, was not at just. all. Thank you very much. No question. And, No. and it was a pleasure always. Yesterday it was again a pleasure, but this time today the transmission was better, and we had the feeling that this transmission is seen by so many people, and it will be seen by so many people again. I'll share it with them. So thank you very much for your very insightful ideas about the Pakistan, about your India, about international politics, about Israel and Palestine conflict, about economy, and we talk about so much. We talk 1 hour 22 minutes is past for this interview का 1 घंटा 22 मिनट हुआ है। एंड बहुत शुक्रिया सर आपका, आप आए। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगेन हमारे शो में आए, मेरे शो में आए, and we'll talk something different what we talked today, inshallah, because you have a lot to share and I have a lot to ask. So When thank will you you very send much. me the link of this? When will you send me the link of this interview? Right away. Give me 10 minutes, I'm going to send it to you. And then I will post it on my Facebook page and Twitter. I have Thank you massive, very much. I can tell you one thing. मेरी massive following है पाकिस्तान में, I know, I know. massive following है मेरी, यानी आफ्टर इमरान खान आई एम द नेक्स्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान। सही बता रहा हूँ। जबकि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान फर्जी मुल्क है, कोई मुल्क ही नहीं है, तो भी ऐसी बात ये ना आज करें सर, ऐसा ना करें। This is my country. Please don't do that. यार तुम्हें दो दो मिला में चार कहने में तकलीफ हो रही है। यू आर Yes, नॉट प्रिपेयर टू फेस द ट्रूथ कि दो दो मिला yes. के चार कैसे हो गया। इट हर्ट्स मी, मुझे बड़ा तकलीफ हो रही है कि दो दो मिला के चार। सच्ची सच कहते हैं, सत्य में बड़ी शक्ति होती है। ट्रूथ हैज ग्रेट पावर। मेरी बात अगर सच है, आज आप ना माने, कल ना माने, परसों जरूर मानेंगे। A तो greater Pakistan. मेरी बात शुरू में नाराज हो जाते थे पाकिस्तानी लोग मुझसे, क्योंकि मैं कहता था पाकिस्तान फर्जी मुल्क है। नाउ दे आर ग्रेजुअली दे आर वेकिंग अप एंड दे फील देयर समथिंग इन व्हाट जस्टिस काटजू इज सेइंग। अरे भाई, आई एम सेइंग आई एम This, वन ऑफ यू, योर yes, sir. प्रॉब्लम्स आर माय प्रॉब्लम, आई फील फॉर यू, आई सिंपैथाइज विद यू, आई एम विद यू, बट व्हेन आई से Yes, दिस but पीपल वाज अ फ्रॉड, आई एम नॉट ट्राइंग people टू are डेनिग्रेट। skeptical. People are skeptical about that an Indian patriotic person, as such a senior man, once is talking about reunification, there must be something behind. We are skeptical, basically. So it will take time for us to understand. You know, when So thank you. Copernicus, the great scientist, said in 1547 that it is the Earth which goes around the Sun, which is known as the Yeah. heliocentric theory, and not the Sun which goes around the Earth, which was the Yes. geocentric theory in the Bible and of Ptolemy. So he was also viewed with the great skepticism. जैसे आप मेरी बात पे Yes. स्केप्टिक हो रहे हैं, तो कोपर्निकस की थ्योरी पे ये कैसे हो सकता है, ये तो बाइबल के खिलाफ है। बाइबल में लिखा है कि सन गोज अराउंड द अर्थ, और एट दैट Yes. टाइम सेइंग समथिंग अगेंस्ट द बाइबल वाज इनवाइटिंग डेथ, you could be burned as a Clergy snake. was there.
क्लर्जी की हेरेसी हुकूमत थी। में गैलीलियो वाज ऑलमोस्ट बर्न्ड एट द स्टेक। गैलीलियो जो जी ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट था, जी वो जी जी सपोर्ट किया उसने कोपर्निकस की थ्योरी, तो ही वाज ऑलमोस्ट बर्न्ड एट द स्टेक। वो तो बचा क्योंकि रिकेंट किया उसने। तो लिहाजा सच जो ट्रूथ होता है उसको एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है, क्योंकि आप लोग के माइंड में तो भूसा भर दिया गया, गोबर भर दिया गया। और हिंदुस्तानी के भी और पाकिस्तानी के जो हेड्स आर फुल ऑफ काउडंग, ब्रेन है नहीं। तो लिहाजा समथिंग समथिंग विच इज टॉकिंग, ये कैसे होगा कि एक ही मुल्क है। तो मगर A greater अगर मेरी Pakistan. बात With this सुनिए, note, we end. With this note, we end a greater Pakistan, inshallah. ओके, You वालेकुम right, sir? सलाम, सलाम Thank you, sir. वालेकुम, प्लीज सेंड मी द लिंक।